Middle East. We wanted to implement it in India, and we didn't spare any effort doing that, including the culture. So the medical director of art is explaining about the lab, and this is what we wanted to do, because what we believe is that we all complete each other. To get the perfect outcome, you need this synchrony and harmony between the physicians and the embryologists, because we complete each other. And the fact that, a physician was explaining about the parameters in the lab, what we invested in the lab, it shows that we are on the right track. We are trying to implement our culture. Go on, because I'm very passionate about what we do. I'm very proud of what we're doing in India, and very excited about what we did and what we will do. So if you give me the mic, I don't mind speaking for 1 hour about our plans, but I think the more interesting person and vision comes from Dr. Fatim. No, I mean, when you do ART or IVF, it's always teamwork. It's like you play cricket. You don't do that as a single person, you do that as a team. And just to mention ART is, I always say it's a new field of medicine. It's only 40 years old, it's 43 years old. If you go to any physician, if you go to a cardiologist, if you go to an internal medicine doctor, these specialties have existed for centuries, if not centuries, for millennia. So we have gained experience for many, many years. Our field, it's a virgin field of medicine. It's a new field of medicine. So in fact, we have to put a question mark behind everything we know. And in order to do so, you have to study to see what you know, if it's correct or incorrect. And furthermore, important to realize differences in geography. You cannot copy-paste a study which was conducted in France or in Belgium and implemented in India. Even within India, if you're in South India or North India, people are different. Genetically, ethnicity, culture-wise, everything is different. And today we are talking about era of individualized medicine. If you speak about era of individualized medicine, you need to understand the cause of infertility. Once you understand the cause of infertility, you can tailor a treatment according to that patient's requirement. It's not one size fits all. And our challenge is having clinics in different parts of the world, understanding the etiology of infertility, tailor the treatment according to that couple's requirement. And that requires research. That requires locally conducted research. And in order to do so, you need to combine the local conducted research and translate it into a clinical activity. If you do not conduct the research, you would always be walking behind. I always say science is like riding a bicycle. If you stand still, you fall. You need always to move in order to move forward and in order to be ahead. And that's exactly what we try to implement and what we are currently implementing in our clinics in India. So you can imagine, जो हम अभी बात कर रहे थे अपने हिंदी में, you see how simple it is. Our group medical director is actually saying the same thing for us. So how properly it is ingrained, among all of us. Like embryology just said, medical director is talking the same what embryology can do. So I think that's the difference which we are trying to bring in. What is best? I think that's what it is. So, but we start with why are we doing this? हमारी इतनी आबादी है, 150 करोड़, and हम और बच्चे पैदा करना चाहते हैं. But the important question is, who are these people who want to have kids? It crosses all parts of society: educated people, rich people, poor people, and not so, well-to-do people. 15 to 20% of the population worldwide is infertile. It is kept under the radar. हम बात नहीं करना चाहते हैं. Social stigma है. There is actually a clinical psychologist here. You would be surprised. People who cannot have kids, उनको कितना मार पीट करते. There are so many. उनके घर में in-laws, husbands, families, they are looked down upon. They are treated, ill-treated, thrown out. Sometimes the problem lies with the husband, which is not recognized.
then they realize it inside the family, and they try to bring other relatives to cover it up. So it's a big medical and social issue. And only when you receive it, हम बाबा लोग के पास चले जाएं, मंदिर चले जाएंगे. So here it is a science. And India में कम से कम 2 lakh IVF clinics. And how many of them have qualified doctors, embryologists? नया ART law बना है. But how many people are going to follow it? Probably 5 clinics in all of India, if that. And government अपनी तरफ से they want to do the right thing. They want to bring in proper ethics, transparency, good infrastructure. It is only when you are affected that you realize the importance. So society has to be balanced. I mean, across all people. I mean, China tried to do this. They saw they had a big population problem, and they controlled it by one-child policy. Now there is complete imbalance. It's an aging society. So even if there is a huge population, you need to have a balanced growth, especially in the educated class, in the people India is a changing economy, changing country, very young population. So, अगर हम आज नहीं करेंगे, 20 साल के बाद हमारी problem होगी. And what do we bring? How are we different? And why is this science important? Like, we have selected the best doctors and people in India, the brightest, the people who are sitting with us, Dr. Parul, Dr. Richa, and हमारे जो doctor लोग हैं, young, educated, foreign trained. What do they bring? Foreign trained तो क्या मतलब? क्यों foreign trained है? Why is it more important? Indian क्यों नहीं important? Because this science started overseas. Some of those learnings we have to bring, and then we have to learn here ourselves. Like Dr. Fatemi was mentioning, with our own population. And this is why research, etc. that we are doing, and the people that we are investing in. हमारी clinic में जो आते हैं patient, we are not the most expensive in India. We are offering a Rolls Royce, the world's best infrastructure, at the price of a Maruti. हमारी treatment का भी वही cost है. But how do we make sure that the people understand? जो हमारे doctors हैं, हमारे embryologist हैं, जो उनकी training है, जो उन्होंने learning सीखी है बाहर से, हमारे doctors से, they have hundreds of years of experience, combined experience, and we are bringing this to our patients. I mean, you come to our clinic, अगर आप हमारी clinic में आएं और देखेंगे, or you compare it to another clinic, but we only have 6 clinics. It is not about promoting our clinics, it is promoting the right science. अब आप वेदांता जाएंगे, बांग्लादेश से, बाहर से, अमेरिका से, यूरोप से लोग आते हैं. बांग्लादेश से आते हैं क्योंकि वहाँ पे facilities नहीं हैं. इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं क्यों? Because it's cheaper. But it is a good science. So it is something like this. And we also have to recognize जो हमारे डॉक्टर हैं यहाँ अपने डॉक्टर हैं. They are the very best. And how do we reach out to them? So there is advertising, and then there is the real science. So what we do is not only infertility as helping couples to conceive, but also we have our own in-house genetic laboratory where we also identify genetic diseases, and this will be very helpful on personal level for couples that they can transmit genetic diseases for their offsprings, and it's even helpful on a governmental level, because all of these affected children, they require for years this kind of very specialized healthcare. And what is very important is our in-house genetic laboratory, they use the most sophisticated and the most advanced technologies in identifying these things. And this is a very complicated part of the field of infertility. So I'm also very happy that we are able to provide this service also in India. So ये genetic की बड़ी important requirement है fertility के साथ. बच्चा तो हो गया लेकिन उसके अंदर कोई genetic problem ना आ जाए. तो ये जो टेस्ट होता है fertility की रिजल्ट के लिए भी important है, पर उसके साथ जो बच्चा पैदा हुआ उसके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जेनेटिक इश्यूज ना हो, तो उस सब के लिए एक अच्छी जेनेटिक लैब होना जरूरी है. वो जेनेटिक लैब भी हमारी इन हाउस मिडल ईस्ट में भी है, तो हमारे जितने भी सर्विसेज हैं हम उसके थ्रू
तो द रिजल्ट है उसका बड़ा साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी और मैन बिहाइंड इट, क्योंकि दोनों चीज़ों से रिजल्ट निकलता है जेनेटिक्स का. तो दैट इज क्लीनली मॉनिटर्ड बाय आवर ओन टीम हियर सिटिंग आउट हियर. तो इम्पोर्टेंट बात वो है, दैट्स व्हाट आई थिंक तो जैसे बोला मैंने कि ये एक टीम वर्क है, तो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन जो सही तरह से है, लेकिन इसकी अवेयरनेस जो लोगों तक जानी चाहिए उसके लिए आप हमारी टीम है, उसके लिए मीडिया हमारी टीम है, क्योंकि आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं हमारे लोगों तक. What Mr. Ibrahim was elaborating on, you see, mostly we are gynecologists. It means we are specialized in women. But imagine if you have a car, you have the engine, you have the gear, you have the electricity. They all have to work together. If you are specialized on engine, you don't know anything about the gear or electric, it might be an issue. So you need to have a holistic approach. You need to have everything under one umbrella. And that's exactly what we do. So the leaders of our group, they all have what we call an ESHRE recognized subspecialty. So ESHRE has a subspecialty, it's the European Society, which is giving a formation of female, male, and genetics. So in fact, you have everything under one umbrella. If you want to treat infertility, you treat a couple. You don't treat a woman. You don't treat a man. You treat holistically as a couple. And that's exactly what we strive to do and what we are implementing in all our clinics. That everything is done under one umbrella. So we also have our own andrologists, we do that. We have geneticians, we have female endocrinologists, we have surgeons. Everything is under one umbrella. And this is exactly the key forward. And I'm very happy that you asked this question. Thank you for that. Yes. First of all, they will have very difficult time understanding and diagnosing male infertility. Male infertility बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आधी से ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो शर्माती हैं. कल्चरली वो आदमी से उनको मेडिकल स्कूल में ही सिखाया जाता है कि वो दे डोंट इंटरेक्ट. Now you need a special andrologist or urologist to do that. वो every clinic पे होता ही नहीं है. हमारे clinic में doctor, whether it's male or female gynecologist, they are all trained to understand and diagnose male and female fertility. अब आपने पता लगाया कि वो जो आदमी है उसके लिए उसको सर्जिकल प्रोसीजर करना है, तो कैसे करते हैं? The other clinics will invite an andrologist or urologist to come and do a procedure. वो सुबह आएगा, पेशेंट OR में होएगा, उसने उसको कभी देखा नहीं है, फेस कवर्ड है, एनेस्थीसिया के अंदर है, ऑपरेशन करके चले जाएगा. उसको मालूम ही नहीं है कि उसने किसको ट्रीट करा, किस लिए ट्रीट करा, उसको प्रोसीजर करके चला गया. In our clinic, the male patient is diagnosed by the gynecologist because they can do both male and female. Then the treatment plan is individualized and done by the same doctor who has seen and understands what the problem is. In the other clinics, a urologist is called on deputation. वो आएगा, like I said, he will not even see the patient's face. He will come, treat without a procedure. So he doesn't even know what affected him. So these are the things that and they will say visiting charges. They will actually charge more for somebody to come from outside, and you will think that you are getting specialized treatment. So to understand genetics, male infertility, female infertility, and how to compensate for all these things, our doctors are able to do this. And this is how we are different. डॉक्टर साहब से तो बाकी भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ इसका क्या है कि हमारा जो कॉस्ट है ना मार्केट में जितने भी प्राइवेट हैं उन्हीं के बराबर है. अब ये तो पहला चीज़ है, राइट. दूसरा, आपके लिए स्पेसिफिक आंसर के लिए कॉस्ट रेंज करता है पेशेंट की एज, डिजीज, क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर. लेकिन ब्रॉड टर्म में आप मुझसे अगर पूछेंगे, ये 1.5 से 3.5 के करीब का आता है एक साइकिल, 1.5 से 3 के बीच में.
right? और भी 1.5 से कम भी 2.5 हो- के कम भी करीब। हो no, जाता कम है। भी हो सकता है हाँ। अगर पेशेंट को सिर्फ IUI करेक्ट, अगर वो IUI एक अलग वैरायटी है जो कि IVF नहीं है, उसमें तो फिर 8-10 हज़ार में भी हो जाता है, लेकिन कुल मिला के रेंज करता है पूरा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि किसी को एक साइकिल की जरूरत पड़ती है, कभी एक में नहीं हुआ तो दूसरे की पड़ती है, फिर तीसरे की पड़ती है। वो जो फेलियर रेट है उसको कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कस्टमाइज्ड प्लान, उसके बारे में देखा जाए, समझा जाए, वो सब चीजें जो हैं। आई थिंक पारुल इफ यू कैन जस्ट एलॉबरेट। तो कर करा के 1.25 लाख से 2 लाख तक का एवरेज। बेसिकली हमको ये समझना है कि हर पेशेंट के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, और इसीलिए एक बॉलपार्क फिगर ये बोलना कि इतने में ही हो जाएगा ये मुश्किल है। हो सकता है कि सिंपल एक गोली से ट्रीटमेंट हो जाए, हो सकता है उसको बहुत हाई डोज इंजेक्शंस और हायर डोज जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत हो। तो इसका ट्रीटमेंट रेंज एक देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट है, और इसीलिए आपको एक स्पेसिफिक प्राइसिंग देने में ये प्रॉब्लम होगी कि हम इसको जनरलाइज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक जनरलाइज कर देंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उस पेशेंट की वो रिक्वायरमेंट ना हो, और फिर उसको लगे कि ये एक सेंटर में जाने से मेरा इतना ही खर्चा होने वाला है। सो हमें किसी यंग वुमन का एग ले लेंगे, प्रोसीजर कॉस्ट मोर, आपको प्रेगनेंसी करा देंगे पहले साइकिल में। मालूम डॉक्टर को मालूम नहीं कि ट्रीटमेंट प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट क्या करूं। देखा कि पेशेंट के पास पैसे हैं, इजी तरीका है, डोनर को पैसे दिए, डोनर का एग लिया। पहले तो सरगसी भी कर देते थे, यहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपके चांसेस क्या हैं अपना बच्चा करने के लिए, और साफ साफ समझाएंगे कि देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर एज वेल। This is what is your problem, this is your chance of getting pregnant. If you are a poor responder, suppose you are a poor responder and still you want to have your own child, you will tell them, okay, this is what it will cost you, there is a chance that you will not get pregnant. But most clinics will send you to a donor and a surrogate and all these things and get you pregnant with somebody else. So all those things have to be taken into account. हमारी clinic में आपको ऐसे बताएं, if you have to select, if you have X amount of money and you have the chances of getting pregnant are twice as high as going somewhere else. Presentations in today's meeting that we have is from Dr. Mina Popovic from Spain, and that's exactly what she's talking about on genetics and the question mark behind genetics in infertility. And it is great that you're asking this question, because this comment has been there that with genetics, basically it's a big question mark. We don't know what we are doing. To give you an example, when you do a genetic testing on an embryo, very vocal people said, look, when you test the embryo, you say it's abnormal, maybe the embryo is normal. When the embryo is normal, maybe it's abnormal. And all these questions have been there over the past 10, 12, 15 years. But today with the techniques, things have improved, and that's exactly what Dr. Popovic was presenting half an hour ago. It is a very technical thing. It's a very technical thing. So what she did, she stratified the test of the embryos in different countries, in different laboratories. And I'm not speaking about only Asia. It's worldwide. It's from the US, South America, Europe, Africa, Australia, Japan, everywhere. So they tested different labs around different worlds, different IVF labs and different genetic labs, in order to evaluate the reliability of these labs. And you know what came out? Some labs, the variability and the negative impact or wrong results was only 2%, some labs 30%. So it's a technical thing, it's a very technical thing. But if you have a lab which has been validated, where the people are making it, where the people and the infrastructure has been validated, the margin of error, I would say, is less than 2% today.
less than 2%. But if the lab and the infrastructure is not correctly validated, the margin of error is huge, up to 30%, which is not justifiable, which is not correct. So just to answer you, it depends who is doing it. If it's done correctly, it is absolutely reliable today. But if it's not done correctly, it's not reliable. So when you talk, do you find that faculty of this will grow there also, so that more people can be facilitated? So already ऐसा नहीं है कि हम private अगर देखें hospitals में भी private also have hospital, government also has a hospital, right? The training and teaching even at AIMS of post graduation post gynecology is still happening. There are students there who undergo this training post finishing their gynecology program, and AIMS also, and there are other institutes also. So there are training teaching happening, but this is a very science driven program. That is where whole science has to come first to India. Currently, as I told you in the start, our range in India in infertility is here and the world is there. That's correct. So to answer your question, which all of them have said, हमारे पास तो अभी रनवे इतना है यहाँ पहुँचने का, साइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम यहाँ पे बैठे हैं, बट फोकस अब स्टार्ट हुआ है. व्हाट वी ब्रिंग इज कितनी जल्दी हम वर्ल्ड के लेवल पे तो पहुँचे पहले, देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन टू अस. हमारे यहाँ जो एक रिसर्चर वाले PhDs बहुत कम होते हैं, और क्लिनिशियंस जैसे हम डॉक्टर बनते हैं हम प्रैक्टिस में घुस जाते हैं, कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं. सो दैट एनवायरनमेंट डजंट एग्जिस्ट वेयरइन वी विल कंटिन्यू एज डॉक्टर्स to continue to do research and do a PhD. That is where Professor Fatemi comes. Okay, thank you. All are doctors. All are doctors. And we have a young doctor. He's also doing his PhD. वो एक्सपीरियंशियल अलग बात है और PhD एक अलग बात है. No, I'm talking They are about the ones PhDs. who Okay. trains. Everyone is a PhD. Okay. एक और बात बताता है शुरू से. In this field of infertility. नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर सुमेश मित्तल जी हैं. यहाँ पर एक हयात होटल में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डॉक्टरों का जो एक सम्मेलन था उसमें बहुत सी बातें बताई गई और अधिक जानकारी सर जी हमें देंगे. तो सर जी किस तरह का ये प्लेटफार्म है जो आने वाले जनरेशन के लिए या जो अभी करंट में जो जनरेशन है इंडिया में खासकर, तो उसके बारे में आम जनता के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोमेश मित्तल हूँ. मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक इंडिया का CEO हूँ. मेरा काम यहाँ पे फर्टिलिटी सर्विसेज, जो कि बच्चे जिनको होते नहीं है, जैसे आमतौर पे नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, तो वो वाली चीज़ें हम करते हैं. हम 1 साल से इंडिया में हैं. इससे पहले हम मिडल ईस्ट, अबू धाबी और यूरोपियन कंट्रीज़ में थे. हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान में आके करने का 2 है. नंबर 1, मैं खुद हिंदुस्तान का हूँ तो मेरे को हिंदुस्तान के लिए एक लगाव है, मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे. और दूसरा चीज़ ये है कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बड़ी बढ़ती जा रही है. हमारे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर एक जगह ये फर्टिलिटी के इश्यूज, बच्चे पैदा नहीं होने के इश्यूज बढ़ रहे हैं. कारण इनके क्या हैं? इनके कारण है कि आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत है, हिंदुस्तान में पॉल्यूशन बहुत है. ये सब कारणों की वजह से अब फर्टिलिटी की, बच्चे पैदा ना होने के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम आती हैं. नंबर 1 कि जो जिसको बच्चा पैदा नहीं हो नहीं रहा है, उनके लिए वैसे भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस मदर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए. दूसरा, ये सोशल टैबू भी है. जहाँ बच्चा नहीं होता उसको बड़ी दूसरी नज़र से काफ़ी जगहों पे देखा जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम साइंस को यूज़ करके हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम फर्टिलिटी कर सकें, हम कैसे दूसरों से डिफरेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक्स खुले हुए हैं. हम टेक्नोलॉजी वाइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के थ्रू करते हैं. इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है इसमें, कि हर मरीज की ट्रीटमेंट उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जाती है. इसके पीछे उसकी रिसर्च होती है, और साथ में जो बच्चा जब होता है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब का. एम्ब्रियोलॉजी लैब इज़ लाइक ICU. जैसे छोटे बच्चों का, 1 दिन के बच्चों का ICU होता है, एम्ब्रियोलॉजी लैब 1-2 दिन का जो सेल होते हैं, बच्चा जब जैसे माँ गर्भवती होती है उससे पहले के जो पहले 2-3 दिन है, उनके सेल को ICU में रख के ठीक करके फिर वापस माँ में डालने की जो चीज़ होता है, वो प्रक्रिया वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी लैब में होती है. एम्ब्रियोलॉजी लैब की जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट हमारे पास है. हम मेक श्योर करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उस प्रेगनेंसी रेट को बढ़ा सकें. आम जैसे हमने पेपरों में देखा है और रिसर्च में पढ़ा है, 30 से 40% के करीब इंडिया में ये सब प्रेगनेंसी रेट हैं.
हमारी लैब्स जो हैं उनमें रेट ये 71% है ग्लोबली, और इसके पीछे रीज़न यही है कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, रिसर्च ड्रिवन, और तीसरा एम्ब्रियोलॉजी लैब जो हमारी बहुत अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि सबके लिए ये हो। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें हमने इंटरनेशनल फैकल्टीज़ बुलाए थे ताकि इसके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके और हम उन इंटरनेशनल फैकल्टी से भी सीख सकें। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो विदेशों में आपने गेन किया है और वहाँ पर अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो वो आप इंडिया में भी यूज करना चाहते हैं ताकि यहाँ की जनता जो है वो मतलब इसका फ़ायदा उठा सके। और यहाँ पर ये भी आपकी शुरुआत हो चुकी है या अभी करनी है? हमारी शुरुआत हो चुकी है। हम 6 सिटीज़ में हैं ऑलरेडी, दिल्ली में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, मुंबई में और चेन्नई में। और हमारा अब आगे का वो है कि हम टियर 2 टियर 3 में जाके 24 के करीब सेंटर्स अगले 2 साल में खोलेंगे। पर मेन इम्पॉर्टेंट सेंटर खोलने का नहीं है, रिजल्ट ओरिएंट करने का है, लोगों को हम सुविधा पहुंचा सकें उसका है। जो आपके सेंटर है वहाँ बहुत से जो दंपत्ति हैं वो आते होंगे जी, तो कितने रिजल्ट आपने अभी तक जो वही मैं बता रहा था, ग्लोबली हमारा 71% रिजल्ट है। तो 71% पेशेंट्स हमारे पहली साइकिल में पॉजिटिव हो गए और वो सब सफल हैं। तो नेचुरली है कि माउथ टू माउथ और जिस तरह से आपका ये बढ़ रहा है अच्छी बात है। लेकिन जो इंडिया में जो फूड है उसका बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि और ऊपर से स्ट्रेस, ऊपर से जो है मेंटली जो आपने कहा है कि बच्चों की लेट शादियाँ होती हैं, तो ये बहुत से कारण हैं। तो इनको आप बिल्कुल लेवल में ला के फिर ये सब कर रहे हैं। तो नहीं, अभी हमारे पास जो मरीज आता है वो तो इन प्रॉब्लम के समय ही आता है। तो हम करते क्या है, उसकी उस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की जाए। जो असफल हो चुका है तब आपके पास करेक्ट, हमारे पास तो असफल लोग ही पहुँचते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अगर इस तरह से प्लान कर रहा हो बच्चा पैदा करने के लिए, तो वो पहले आके ही आपसे कंसल्ट करे तो वो वेरी गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। जी, वो होना चाहिए वैसे। वो 2-3 साल वेस्ट हो जाते हैं फिर और प्रॉब्लम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में भी लाए हैं और इंडिया वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Those first 5 days have a huge bearing. Look, you can say we are working on it, but we are working with people. You know, we have to develop this incubator as a machine. Okay. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर सुरेश जी हैं। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो नए दंपत्ति हैं उनको जो बच्चा पैदा करने में जो दिक्कतें आ रही हैं आज के माहौल में, जिसकी वजह से जो है हमारे देश में पोल्यूशन, उसके बाद रेडिएशन, तो सर जी ये जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से, खान पान जो है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉर्ट आउट होंगी सर? आपके पास तो समाधान है, आपके पास जो पहुंच गया तो आपने वहाँ कुछ न कुछ हल तो निकालना है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या आप गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से वो जीवन जिए ताकि वहाँ तक ना जाना? लाइफस्टाइल चॉइसेस कई चीज़ की होती हैं, इंक्लूडिंग धूम्रपान को नहीं करना, उन जगह में रहना, एक्सरसाइज करना, वेट कंट्रोल करना, घर में फिल्टर लगाना। कई चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते बिकॉज एनवायरनमेंट है, कई चीज़ें आप कर सकते हैं। सो टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर द पेरेंट्स, टू especially when you are trying to conceive and have a healthy child, you should make healthy choices, including staying in an environment where the air pollution is little or less and can be controlled, especially avoiding cigarette smoke, secondhand smoke, drinking, not having drugs, not having alcohol during those days. And if you need treatment, if you really need treatment, then going to institution, whether it's ours or anybody else's, people who have invested, जो इसमें infrastructure लगाया है, so that वहाँ पे जहाँ पे babies को IVF babies को treatment करा के grow करते हैं, the labs have that kind of environment that the pollution is controlled or eliminated by use of sophisticated equipment. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. रिगार्ड्स।